Okay, so today's topic is interesting because even if we don't have a daughter and a son and we haven't experienced these two, maybe we have got brothers and sisters. So we have seen the way children are brought up. And I will start with Mrs. Agarwal's observation. She had written to me. And I wanted to comment on that. And basically we are talking of gender equality, how we perceive it. And all of us like to believe that we bring up our sons and daughters equally and it should be equal. But what is equality we will talk about today. Now, with your permission, Mrs. Agarwal, I'd like to read out what you wrote. And I want discussion on that. She writes to me that I believe the prime job of a female is to make a home and prepare the generation next to face the world, while that of a male is to protect the family from unnecessary exposure and create an ideal for Gen Next. Although both of them have to do both the jobs a bit so as to achieve a perfect balance in today's life. So this is, I think, a very common kind of a mindset that we have. What she says is reflected in almost all educated households of India. And she further writes that also males should be taught from the start how to command respect rather than demand it, and females should definitely be taught that giving respect is not a mark of weakness, it's rather a strength in itself. Father should undoubtedly be respected by the mother and vice versa, but he should be established as the prime authority by the mother. Parenting becomes quite easy also. With that, ego issues are automatically dealt with too. Now, I would like to start with this comment because, when we talk of gender equality, if you speak like this on a forum, you will be attacked. Because these days, the young generation and the forward thinkers, they really believe that these roles should not be defined by us. We are nobody to define roles. And God has not really defined roles for us. God made the two sexes, of course, one female and one male. The gender roles we have given them. I'll speak in Hindi a bit in case there are non-English speaking persons. कि भगवान ने हमको एक औरत और एक मर्द बनाया, उसके बाद हमने उसको ये रूप दिया कि औरत जननी है, औरत जो है वो रिस्पॉन्सिबल है घर की सुख शांति के लिए, जो फादर है या जो मेल मेंबर है उसे एक स्टेटस वो देना चाहिए और उसको सुपीरियर अथॉरिटी एक उसकी होनी चाहिए, तभी घर अच्छे चलते हैं. So शुरू में I suppose man was made like that कि man hunter था and woman used to keep house. So उससे धीरे धीरे हमारे अंदर ये संस्कार इतने ज़्यादा हो गए that we started to believe that we have certain roles. Now unfortunately क्या हुआ कि women started getting awakened. Now when they started getting awakened and educated, then उसके बाद ये जो clash शुरू हुआ. Because then she thought that she was equal to man, and why not? So she is equally educated. Now उसका जो रोल था घर बनाने वाले का वो तो रहा ही रहा. उसने अपने ऊपर एक दूसरा रोल ले लिया पैसे कमाने का या प्रोवाइड करने का, जो आदमी के ऊपर था. अनफॉर्चुनेटली आदमी ने इसको रेसिप्रोकेट नहीं किया. सो आदमी ने अपना रोल वैसे ही रखा और उसके बाद जो वुमन ने दोनों रोल्स ले लिए तब वो उसमें there started to be a tension, because how many things can you do? A woman working outside, a woman working at home. You would have seen this is a very very common scenario कि माँ बाप दोनों काम करके आते हैं, आते ही the lady gets into the kitchen, साड़ी ऐसे करके पहन के kitchen and she's getting the food ready. The man meanwhile picks up the remote, sits and watches TV. Now because the woman has taken it upon herself, the man says मैंने थोड़ी बोला था पैसे कमाओ, ये तो काम तुम्हारा ही है, ये काम भी आपका है. उसके बाद जब बच्चे पैदा होते हैं रात को कौन जगेगा? मदर जगेगी, क्योंकि दूध आपने पिलाना है, मुझे क्या करना है, सो वो काम भी आपका है. देन बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं तो उनको डिसिप्लिन करना, आप घर में रहते हो, आप मदर हो, वो भी काम आपका है.
फिर उसके बाद जब बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो होमवर्क करवाना, वो काम तो डेफिनेटली मदर का है कि मेरे में पेशेंस नहीं है. सो एज अ रिजल्ट जो लेडीज जो भी विमेन थी, उनको लगने लगा कि हमने तो बहुत ज़्यादा कर लिया. सो दैट रिबेलियन स्टार्टेड कमिंग इन. दैट रिबेलियन नाउ लेड टू फेमिनिस्ट मूवमेंट्स एंड ऑल ओवर दे सेड कि दिस इज़ नॉट फेयर कि हम सब काम करें और ये तो आराम से बैठे हैं. मैन सेड कि हमने तो नहीं बोला था भाई आप काम करो, लेकिन बोला तो नहीं था. बट व्हाट हैपेंड वाज कि जो भी घर के काम थे, जो भी बच्चों के काम थे, वो अनपेड लेबर. सो एज अ रिजल्ट विमेन जो थी फाइनेंशियली तो कभी इंडिपेंडेंट नहीं थी, काम उसके लिए कोई पैसा नहीं था. सो अल्टीमेटली जब आदमी का मन भर गया या उसको कुछ और दिख गया, तो वो जब छोड़ के जाता था, तो वुमन वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई विदाउट एनी इकोनॉमिक सपोर्ट. So that is how women started coming in. So with this background and what Mrs. Agarwal says, I would like to start the discussion with how many of you agree with her. Just give me a hands up first, then we'll ask her to explain. Give me a reaction. Just give me a thumbs up, hands up that yes, we agree with her, or raise your hand. How many of you feel कि yes, that you know ultimately the man is the head of the family, उसी को होना चाहिए, the whole family should feel that he is there. Of course, I mean she's not saying कि woman को बिल्कुल पैर की जूती होना चाहिए. She has an identity for a woman, but there is a definite thing कि a man is the superior one जो should control. So how many of you agree with that? I don't see very many hands up. Okay. So now Mrs. Agarwal, now explain your viewpoint. Hello everyone. So this is for the first time I'm speaking on such a topic, but I'm quietly labeled as an anti-feminist also. But what I feel is कि हम लोग जो है जिस समाज को हम बिलोंग करते हैं, अब इस जनरेशन में, हाँ हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में चीज़ें अलग थी. उस टाइम पे ये ट्रांजिशन हो रहा था जब फीमेल्स बाहर निकल रही थी. तब मुझे याद है मेरे फादर भी डॉक्टर है, तो उनकी बहुत सारी कलीग्स हुआ करती थी. तो आंटी लोग घर आके खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी और बाहर भी काम करती थी हॉस्पिटल्स में. तब एक बार तो मेरे फ्रेंड्स भी जो थे हमारे, तो उनकी मदर्स भी 12-1 बजे तक कॉलेज से आती थी, मेडिकल कॉलेज से, और फिर वो बना रही होती है. दे यूज्ड टू टेल अस मम्मी लस्सी बना के रख के जाती है एंड देन आके देती है. सो एट दैट टाइम द रोल्स वर रियली लाइक दैट कि हमारी मम्मियाँ जो है बाहर भी काम कर रही होती थी और घर में भी काम कर रही होती थी. मेरे साथ ऐसा था, मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी, बट माय डैड ऑलवेज सेड कि मतलब द वे शी वर्क्स आई कैन नॉट. I can see patients, but then all of the house is being taken care of by her, and she was the one who used to take care of bills and everything, whatever you can think, she was the one. फिर हमारी जनरेशन आई, हमारी एक ह्यूज जॉइंट फैमिली थी, सब अलग अलग घर में थे, बट सब ऑलमोस्ट साथ में रहते थे, पूरा सब बिजनेस साथ में था. हम लोग 16 कजिन्स थे, आउट ऑफ देम 11 वर सिस्टर्स एंड 11 ब्रदर्स एंड 5 सिस्टर्स. और मम्मी की जनरेशन में ऑपोजिट था, देयर वर 16 सिस्टर्स एंड ऑल दैट कजिन्स. तो घर में लड़कियों का ही चलता था हमेशा, जो हमने बोल दिया वही खाना बनेगा, हमने जो बोल दिया वही होगा. भाई लोग भी सब एक टांग पे खड़े हो जाओ तो एक टांग पे खड़े हो जाएंगे. बट देन हमारा ये था कि वी वर टॉट रिस्पेक्ट. आप सुबह उठेंगे तो आप राम राम बोलेंगे, सबसे छोटे लोग बड़ों के पैर छुएंगे. लड़कियां तो भगवान है, वो किसी के पैर छूती नहीं है, लेकिन मामियां जो है बहू बनने के बाद में वो जरूर पैर छूती है. दैट वाज अ काइंड ऑफ डेकोरम दैट वाज मेंटेन. मतलब ना हमारे पर्दा सिस्टम था, ना आने जाने की रोक टोक थी, ना पढ़ाई लिखाई की रोक टोक थी, कुछ भी नहीं था. लेकिन आपको लिबर्टी के साथ साथ देयर वाज अ डिसिप्लिन, देयर वाज अ हायरार्ची कि नाना जी जो बोल रहे हैं वो है, दादाजी जो बोल रहे हैं वो है, ताऊ जी जो बोल रहे हैं वो है, और वो कभी डोमिनेट करते नहीं थे. मतलब माय ग्रैंडफादर वाज द काइंड ऑफ पर्सन कि अगर मेड नहीं आई तो वो अपनी डॉटर इन लॉ के साथ बर्तन धुलवा लेते जाकर के कि भाई मैं अकेले काम नहीं करने दे सकता हूँ. दैट काइंड ऑफ हार्मनी वाज देयर इन आवर अपब्रिंगिंग. सो द सेम हार्मनी इज कैरिड फॉरवर्ड इन माय होम. आई गो टू हॉस्पिटल. अब एक दिवाली थी जब मैं रात को 9 बजे लौट कर आई आईसीयू ड्यूटी के बाद. तो मैं जब आई तो मेरे घर का सारा काम हो चुका था. मतलब मेरे फ्रेंड्स आने वाले दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए, हाँ मेरे हस्बैंड को कुछ ज्यादा बनता नहीं, तो उन्होंने सारी बेडशीट्स निकाल के हर एक चीज कवर करती थी. मेरे घर की सारी बेडशीट्स बाहर थी, बट देन ही हैड डन एवरीथिंग. ही हैड ऑल फूड, ही हैड लाइक अरेंज द हाउस एंड सो मेनी ओकेजन्स ही डज दैट. तो मुझे ऐसा लगता है कि सही, लेकिन कार्तिक को जब डराना होता है तो मैं ये बोलती पापा को बता दूंगी. And then he is like कि पापा के सामने इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए मेरी. So he listens to everything that I say, and though my husband knows everything that goes on in house, but he pretends मम्मी क्या बताने वाली थी ऐसा वाला. So that's very easy for me. The parenting becomes very easy for me because he cares
what my grandfather will think of me, what my father will think of me. So that authority is in respect. And that makes my husband also very responsible. मतलब he is a totally devoted person because he knows कि हम उसके बिना कुछ भी नहीं करेंगे. I'm interrupting you with one question. Okay. Now you've heard what she says. Now suppose scene was reversed, and suppose her husband came home at 9 o'clock and she had done what her husband had done. पूरे sheet cover करके खाना order कर दिया था सब कुछ. Will the husband say कि so nice of her, you know, she helped me and she did everything, you know? हम जब भी आदमी हमारा जो हमारा supposedly काम होता है जब वो करते हैं हम इतने खुश होते हैं, उनका इतना एहसान मानते हैं और हम उसको उतना proudly बताते हैं. Reverse is not true because they take it for granted. No, ma'am, but that's what has changed now. मतलब all my colleagues, including my husband, my friends' husbands, and my cousins, they appreciate. रोज खाना खा के लोग बोलता है कि यार तेरे जैसा खाना ही कोई नहीं बनाता है. Now the things have changed. मतलब this generation specifically, जिसके हमारे बच्चे second, third class में हैं, आप वो husbands देखेंगे तो they are very different from what 10 years back you हुआ करते थे. Agree. So now I think कि अब लड़कियों को ये जो एक rebel आ गया है ना, उसको थोड़ा सा calm down करना चाहिए. मतलब personally, you don't have anything to rebel about. Yes, okay. Any other viewpoints on this? Anybody else would like to say something on this? Now, I really feel that Mrs. Agarwal is one, I think very lucky person also, because this is not true of society, not even in the educated society. And not like she says, बहुत change हो गया है. What my husband was, I see my son-in-law, definitely a lot of change. Now, what I see is कि what I was pointing out, कि हमारा जो मन में ये जो एहसान की भावना है कि देखो हमारा son-in-law कितना अच्छा है कि वो help करता है, हमारा husband कितना अच्छा है वो help करता है. That means in our mind, हमारी psyche में, we do not expect them to do this. When they do it, we are very happy. Men की psyche में, they expect women to do this. When they do this, yes, they will appreciate because और कुछ करें, खुश हो जाए. But in this psyche, it's not एहसान for them. It is कि ये तो इसकी job है, so बहुत अच्छा करती है, very good. Like we would say, my husband's earning very well as a pride. But we expect them to earn. It is not that वो एहसान कर रहे हैं कि earn करके. Similarly, ये जो gender roles हैं, कहीं ना कहीं हमारे mind में इतने set हैं कि हम उसको भी एक जो मानते हैं वो एक बहुत बड़ा एहसान मानते हैं. And what she says is definitely changing in the upper middle class, in the urban society, in the young generation. But by and large, if you see amongst even your own age group, what you say कि second, third में जिनके बच्चे उनसे पूछो, नहीं, वहाँ भी घरों में जो women के roles हैं बहुत well defined हैं. और जब उनके husbands help कराते हैं, मतलब मेरा husband तो बहुत अच्छा है, मेरे को help करता है. Whereas when I go out to work, I don't think my husband's ever thought कि look at her, so nice, she's helping me earn money. You see the difference in the psyche? So, we don't take it naturally. वो मेरा काम करना बिल्कुल एहसान नहीं है. She does it because she likes it. I mean, she wants to be independent. She is going out to work. It's very nice. And then when I make a statement like, my husband lets me work. Now, this lets me work is allowing to work. Who allows you to work? A master allows you to work. Are we partners or are we master and servant? So you see these kind of psyche, this is a very बहुत subtle चीजें हैं जो happy homes में हम बिल्कुल देखते भी नहीं हैं, इसको हम महसूस भी नहीं करते हैं. ये चीजें महसूस होती हैं जब happy homes नहीं है, unhappy homes हैं. तब वो इनमें से अगर कोई ऐसे हैं जिनके घरों में ये problems हैं और ये tussles हैं, वो recognize करेंगे कि उनको इस बात से कितनी तकलीफ होती है. Because either the woman is earning because there is a financial need, or
it doesn't have to be a financial need. It's a personality need. I may not need the money, but I need my identity. How many women are there who are sitting at home and educated, capable, not working? Either because they're not allowed to work, or their roles are such that they feel कि they will neglect their families if they work, because उनके mind में तो है कि सारा ये तो हमारे ऊपर है घर, उनके साथ कुछ कोई share नहीं कर रहा है. So these are the kind of gender differences in society. Now today we are really not talking of women's liberation or gender differences. We are talking of parenting. You as young mothers, how are you making sure that your children don't grow up with these ideas? I basically, as a personal opinion, I feel just the fact that you feel that either you are entitled to more than the other gender is bad enough. If two human beings are there, they are entitled to the same life. How are we making sure that our children get it into them, whether it's a boy or a girl? Second point, Mrs. Agarwal, when she wrote to us, is हमारे घर में लड़कियों की चलती थी और जो लड़कियां थी वो बहुत powerful थी. कई घरों में ऐसा भी होता है. The daughters are so favored that again there is a mismatch. And it's not only about the girls, more about the girls, because Indian society में girls are suppressed. But it is about any inequality in the gender. What you excuse a girl, you do not excuse a boy. You would save so much for a girl's marriage. I've never heard anybody saving for a son's marriage. बेटे की भी तो शादी होती है ना, है ना? So ये तो मैंने कहीं नहीं सुना कि हम ना पैसा जोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे बेटे की हमने शादी करनी है. So these kind of differences, this is what we are going to discuss today. Now in your homes, when you have your children, now what do you how often have you heard statements made where children are made to differentiate between the two sexes? Chat box में write some of the statements you've heard जिसमें you feel that the children are taught the differences, or subconsciously उनमें ये, जैसे I'll give you one example. You will buy always pink frocks for girls, you will buy blue for boys. Simple, but there is a difference. लड़की है उसको pink अच्छा लगेगा, लड़का है तो उसको blue अच्छा लगेगा. So similarly, statements that are made which give you these differences. Can you write in the chat box? Any statements that come to you? Why are you crying like a girl? Very common. बेचारे लड़कों को हम रोने ही नहीं देते हैं. So all the time they feel they are strong. They have to be strong. Okay, लड़के कभी रोते नहीं. That I think everybody has written that. So this is a very common thing. Anything else? गर्ल्स जैसा काम मत करो. अगर आपने इसी एक बार क्या हुआ, हम लोग कहीं बाहर गए और हम बच्चों को इकट्ठा छोड़ के जाते थे. So 3 friends had, one friend had 2 daughters, I had 1 daughter, another friend had 1 daughter, and the 4th friend had 1 son. So जब हम वापस आए तो ये जो खेल रहे थे, तो ये सब मेरे तिल्ले वाला घाघरा पे डांस कर रहे थे. तो वो लड़के को भी उन्होंने घाघरा पहना के वो भी डांस कर रहा था. The mother got so angry. She said, मेरे बेटे को बना क्या दिया तुम लड़कियों ने? So actually she was angry. मेरे लड़के को ऐसे करके तो लड़की जैसा बन जाएगा. So for many days she did not allow her son to come and play with our girls because he was picking up the traits of the girls. So again, any other things like this? Now when fortunately in Icon we have a cooking competition जिसमें ज़्यादातर prizes लड़के जीतते हैं, which I feel very very happy about. But by and large, yes,
प्रेशर ऑन बॉयज टू बी एज कंप्लायंट एज गर्ल्स. टीचर्स हमेशा कहती है, लड़के, मैं भी कहती हूँ कि देखो लड़कियों को कितना अच्छा है, ऑलवेज डिसिप्लिन. इट्स यू बॉयज हु आर राउडी. सो दे आर टॉट कि ओबीडियंस, and you know actually what harm we are doing is not telling the boys, reinforcing कि obedience जो है is a girl trait. Boys don't have to be obedient. If they are not obedient, it's natural. When we say girls को कि देखो कितनी, या time limits differ. Yes, if your daughter's out, you're worried. If your son is out, you're not. And yesterday I attended a session on child abuse, जिसमें you'll be shocked. But child abuse, you would be knowing as a doctor, 50.4% of the girls are abused and 49.6% of the boys are abused. It's almost 50-50. लेकिन हम लोग लड़कियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, लड़कों को ठीक है. Because we, and you know, all the time psychologically they are so prepared to be strong that they don't know कि मतलब अगर वो किसी उसमें पढ़ भी जाए, they'll never come and tell you because they'll think it's a sign of weakness. So boy will never come and complain कि मेरे साथ abuse हुआ है. Okay? Then you need to protect your sister. हम boy अगर छोटा भी है तो उसको एक बार हम, my grandson is 10 and my granddaughter is 16. So one day my son-in-law was out और हम तीनों, my daughter, myself and my granddaughter, 3 females और वो 10-year-old boy, एंड मजाक में ही, लेकिन जो वो हमारे से जो सेंटेंस निकला, ओके आदू, टुडे यू आर द मैन ऑफ द हाउस, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अस. You know, such a damaging statement to make. And this I'm telling you of people like us. We are so aware, we are so forward. कोई हमारी, if somebody asked me, there is no differentiation, we don't have gender bias, but they're so deeply ingrained कि subconsciously हमारे मुंह से भी ये निकलता है. Okay, now if a boy doesn't like sports, you say, how can you not like sports? लड़कियों तुम गेम्स नहीं खेलते हो, और लड़कियां अगर चुपचाप बैठ जाती हैं और गॉसिप करती हैं, इसे लड़कियां है ना, ये तो खेलेगी नहीं. So you see, these are small things which we are putting into the children. बचपन में हम लड़कियों को क्या खिलौने देते हैं? डॉल्स. लड़कों को क्या देते हैं? गन्स. एंड देन वी से कि नेचुरल है. नेचुरल बिल्कुल नहीं होता है. स्टडीज हैव शोन. नहीं, you would bear with me? You're a pediatrician, Mrs. Agarwal. Please speak on this. What do your studies show? Studies definitely show that कि there is a certain genetic makeup difference, because हर मदर आपको ये बताएगी ना कि लड़की इतनी अच्छी है, इतनी compliant है, लड़का जो है he owns his own thought process, but most of it is defined by us. अगर हम उनको डॉल देंगे और इनको ये करेंगे, mostly जो childhood जब तक it's like less than 1 year a girl या फिर पैदा नहीं हुई है, तब तक पेरेंट्स का रहता है मुझे बॉय चाहिए, जो हम लोग प्रैक्टिस में देखते हैं. When as pediatricians patient come pregnancy में या immediately newborn period में, तो they want a boy. और अगर NICU में अगर female death हो रही है, they are not that worried. But once the girl crosses this thing of 6 months or 1 year, when the same child comes to pediatric OPDs, the girls are more cherished ones because they are more loved ones. Why? Because they are very compliant. They don't create any trouble at home. And then that behavior को उतना ज़्यादा घर पे प्रमोट किया जाता है कि अल्टीमेटली वो गर्ल का वो माइंडसेट बन जाता है. और बॉयज पे हमेशा ये इनके राउडीनेस और इस सब के लिए उनको इतना प्रेशराइज किया जाता है हाउस होल्ड में कि वो उनका माइंडसेट बन जाता है. इट्स आवर अपब्रिंगिंग. जो हम बॉयज को जो बना रहे हैं ना, तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हें ये करना है. बाद में सेम बॉय जब अपनी वाइफ के साथ ये करता है तो हम उस पर जो है ऑब्जेक्शन रेज करते हैं. अभी कई मदर्स अगर बॉयज घर में हेल्प करे तो वो बोलते हैं अरे तू क्यों कर रहे, तू बॉय है. और वही लड़की को बोलते हैं आप घर का काम करिए. अब यही बॉय बड़ा होने के अपनी वाइफ को बोलेगा मैं क्यों काम करूँ, तू काम कर, तो वाइफ बोलेगी तू मेल शॉपलेस है. इट्स आवर अपब्रिंगिंग. अगर हम चेंज होंगे तो ही आगे सोसाइटी चेंज होगी. एग्जैक्टली. नाउ यू सी, शुरू से हम जब डॉल देते हैं तो बच्चे को, आप गर्ल को आप एक रोल दे रहे हो कि योर रोल इज टू रेयर एंड केयर, और वो उसमें ढलती जाती है.
Whereas boy को जब गन देते हैं तो you are the masculine macho person who your role is to protect, and किसी को दुशम करो तो वो बहुत अच्छा हम उसे appreciate करते हैं. So these are things which are absolutely ingrained. I mean, there have been studies which have shown कि अगर boys और girls को opposite उसमें treat किया जाए right from the beginning, तो girl will turn out to be like boys and boy will turn out to be like a girl. There's nothing genetic in it. भगवान ने हमारे अंदर बिल्कुल नहीं डाला है. But as society एक छोटी छोटी बात हम कहते हैं कि हम एक जैसा ट्रीट करते हैं, लेकिन छोटी बातों में इतना वो करते हैं like she said, और वही चीज़ जब बड़े होके आती है. अब आफ्टर ऑल 20, 22, 30 साल के लड़के में जब रोज के रोज उसे एनवायरनमेंट से यही मिलेगा तो वो क्यों नहीं ऐसा बनेगा. सो इसलिए दिस इज हाउ जेंडर रोल्स आर डिफाइंड. लड़का जब आपका फादर्स बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं नेचुरली. इट इज नॉट दैट दे मीन टू बी अब्यूसिव. उनके मुंह से मतलब 2 वर्ड्स और 1 गाली अगर निकलती है तो वी डोंट इवन ब्लिंक, वी डोंट इवन से कि क्या बोल रहे हो. कैन यू इमेजिन आप करो तो वही चीज मतलब एक लेडी जब करेगी तो इतनी ज्यादा बड़ी और उसके ऊपर इतना क्रिटिसिज्म होगा. Whereas जब आदमी करेंगे तो उसको हम अनसुना कर देते हैं. Now the boy is listening to this. For him, his father is the role model. When we have children who abuse, it is 99.9% that the father is abusing. And father does not realize that he is abusing. For him it's normal language and you accept it. अपने यार दोस्तों के बीच में also जब वो गाली देके बात करता है आपको भी नहीं सुनाई देता है वो. और वही चीज जब लड़की करेगी तो it is very different. Now, do we ever tell the boys, don't go out after 7 o'clock because there might be girls wearing short skirts and you might get tempted? So इसलिए तुम अपने घर में रहो. नहीं, गर्ल्स को बोलेंगे शॉर्ट स्कर्ट्स मत पहनो. अगर देखने वाले की आंखें हैं, आई मीन आफ्टर ऑल आप मत देखो, इतना कुछ दुनिया में हो रहा होता है, आपको सब देख के तो टेम्प्ट नहीं होना होता है. डू गर्ल्स गेट टेम्प्टेड सीइंग अ शर्टलेस मैन? और अगर वो दिल में टेम्प्ट होती है, इट्स अ नेचुरल थिंग कि यू फील कि व्हाट बॉडी, लेकिन आप जाके उसको छुओगे तो नहीं, आप उसे टीज तो नहीं करोगे, आप उसकी शर्ट तो नहीं उतार दोगे. तो इफ गर्ल्स कैन कंट्रोल एज ह्यूमन बीइंग्स, व्हाई आरंट वी टीचिंग द बॉयज टू कंट्रोल? एंड व्हेन दे से कि उसने ऐसा डिजर्व किया. जनरली डोमेस्टिक वायलेंस होती है. सो द मैन सेज कि शी ड्रोव मी टू इट. आपने कभी सुना है कि the wife gets driven to slap her husband? और हस्बैंड ज्यादा इरिटेटिंग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप स्लैप तो नहीं करते. तो वो जब चीज एक ह्यूमन बीइंग में आ सकती है तो वो क्यों नहीं ना. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर, शराब पी के उसके बाद एब्सॉल्व्ड ऑफ ऑल गिल्ट कि भाई मैं तो था ही नहीं, वो मैंने तो पी रखी थी इसलिए हो गया. If women can without drinking have fun, be lively, be active, why can't men be active? So these are the role models our boys are seeing at home, and they feel it's okay to do it. This is my right, and this is what they're growing up with. Then they come to school. School mein I would like the teachers now to answer this. Now, in your classes, who is smarter, the boys or the girls? In general, if you have to say, girls smarter हैं कि boys smarter हैं, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? Girls smarter हैं कि boys smarter हैं? Without seeing, वैसे 2-3 आ रहे हैं, but without seeing, I can tell you 100% teachers बोलेंगे girls smarter हैं, है ना? Now, girls ma'am. So all of you will say, so again, this is what we reinforce every day. देखो गर्ल्स कितना अच्छा आंसर करती है, देखो गर्ल्स कितना अच्छा काम करती हैं, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हारे को तो सिवाय खेलने के कुछ वो नहीं है. So this is where the difference is hammered every day in school. Who raises the hands more, girls or the boys? So when girls raise their hand, they know it.
So they raise their hand, boys उनको देखते हैं. Now it builds a feeling of resentment कि अच्छा ये तो बड़ी स्मार्ट समझती है अपने आप को. Feeling of resentment turns into violence. फिर उनको लगता है कि where can they score over this? So where can they score over this? उनको तंग करके, जो उनकी वो सोचते हैं कैपेबिलिटी नहीं है, so उनको पोक करेंगे, उनको तंग करेंगे. Girls get irritated, then they will try and get attention that way. So this is how again it is coming up in class. Teachers are forever telling them, boys, you are rowdy. Now moment it comes to who gossips more. We immediately say girls, but actually boys जो हैं वो कहीं ज़्यादा शायद बात करते हैं एक दूसरे की, लेकिन it is connected to girls. So all the time the gossiping thing is connected to girls. Now comes roles which they see in their life. How many of you have your parents staying with you, looking after your old parents? Radhika, one, very good. But if I take a little poll, don't you agree that more often than not it's the in-laws and not the parents? Obviously you will say कि हमारी society ऐसी है, after all हम शादी करके लड़के के घर जाते हैं. But आजकल तो ऐसा नहीं है. I would say in nuclear families जहाँ आप by yourselves रह रहे हो, just the husband wife are staying, when your parents come to house, you feel अंदर से not only the society, not only the husband, not only the in-laws, even the girl feels कि कितना अच्छा मेरा husband, मेरे parents आते हैं ना, तो he adjusts so well. Whereas it is taken for granted when your in-laws are staying. So the child is seeing that it's okay for my paternal grandparents to stay, but my maternal grandparents, they have their own house. So that is their house and this is our house. Whereas when the Dada Dadi come, this is their house also. So this leads to this again gender difference कि मुझे जो है अपने parents का करना है, and जो दूसरे के जो girl के parents are not so important. And that is I think what drives the society to want boys, because we look for our old age comfort. We look for कि हमारे को old age में कौन देखेगा, तो इसलिए we want boys. So to get over all this basic छोटा mindset that has to be changed. Again, then we sit and watch TV. Can you now tell me some ads which are really gender biased ads? सोचिए वो ads जो आपने देखे हो टीवी पे जिससे total gender bias आपको दिखा हो. A little bit obscene, I must say. But all the soap ads, they feature the females in the bathing and all. So stupid. See, the beauty, the maintenance of your self beauty is all female. Soap ads are females. Okay, Nirma का ad कभी आदमी को देखा है कपड़े धोते हुए? Why can't the man wash clothes? Nirma है, Nirma तो washing clothes है. But we never see उस ad में कि आदमी wash कर रहा है. Johnson baby soap, आदमी नहीं दिखेगा कि वो भी नहला रहा है बच्चे को. That motherhood is only associated with the girls. तो father क्यों देखेगा बच्चों को? Because उसको शुरू से ये बताया ही नहीं गया है कि आपका भी रोल है बच्चे में. So that is why parent teacher meeting पे we have not even 10% fathers. Because वो Johnson baby ad में तो बताया गया है कि तो mother की babies mother की responsibility है, तो वो क्यों आएंगे? वो अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं. So you see, this is how little things it builds. Fair and Lovely, yes. Fair and Lovely is very gender conscious ad, because आप fair होंगे, आप सुंदर होंगे, तो your whole worth is in your beauty. Man को his whole worth is in his earning. A woman is less attractive when she is earning more. It's unfortunate, but अगर आप अपने भाई के लिए लड़की देखने जाएं, you want an earning person कि उसको help करे, उतना हो कि उसका हाथ बटाए, उसको थोड़े पैसे घर में आने दे. लेकिन अगर वो टॉप मॉडल है और टॉप अर्निंग है, you're not
let your brother get married to her, क्योंकि वो तो मेन अर्निंग मेंबर बन जाएगी, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं रह जाएगा, फिर तो बेचारा हैंडपिक्ड हो जाएगा. How many house husbands have you seen जिन्होंने अपना करियर छोड़कर अपनी वाइफ के करियर के लिए घर संभाला हो, बच्चे संभाले हो? Have you seen any in your lifetime? I have seen one. पूरी लाइफ में I've seen one. You know, I was working and I mean a house husband by choice. ये नहीं है कि जिसको कोई नौकरी नहीं मिल रही है, शराब पी रहा है, तो house husband ही हुआ ना. So not that. You know, I was running a placement agency where we used to give jobs to people. And one day this very smart, handsome man came and he was about 55, 60. So he came looking for a job. So and he was very qualified. He was an engineer and उसने काम भी काफी किए हुए थे. So I was asking him, I said, why have you left so many jobs? Your profile has so many jobs. He says, because wherever my wife gets posted, I go and leave my job. So next में जो मुझे मिलता है मैं करता हूँ. So I looked at him. So I said, why? He says, you know, my wife is the managing director of HAL. Now she has a very, very important job. And right from the beginning, she was very bright in her career. I was good in my career, but not as good as her. So then I decided, okay, one of us has to, and she did not have very much of homemaking skills. She was so brilliant कि उसने शुरू से काम किया था. Then we took a conscious decision कि बच्चों को किसी ने तो देखना है. They had 2 children, तो उसको मैं देखूंगा. And I would sacrifice my job. This thing, sacrifice, he didn't even use the words, which I was very impressed. He says, I will look after the house. So I asked him, I said, gosh, you sacrificed so much. He says, no, I didn't sacrifice anything. I loved my child. And she also loves the child. So one of us had to do this. So I took on the secondary role. I work, but I work as per her convenience. I said, you're the first man you have met, you know, who's not ashamed of saying that. अगर कोई करेगा भी तो वो छुप के करेगा. So that is, you know, what we have to teach our children. It's not unmanly not to have that role. You can have that role and still be the man. Again, Coca-Cola ad, have you seen? कभी कोई लेडी वो पूरा वो जंप करके ऊपर से एंड कोक की बॉटल क्यों नहीं ले सकती है? Why ऋतिक रोशन? I think ऋतिक रोशन is one of the sissy characters. मतलब कुछ दिखता भी नहीं है कि वो डांस ही कर सकता है. But वो we accept. But we will not accept, you know, a lady who's athletic and who can go to the mountain top and get a coke. Another thing we do is, you know, just read the essays that children write, my mother and my father. It's so sad when, you know, I take this class 1 and 2 and I see their essays. When they write on my mother, I love her very much, she cooks very well, she keeps the house clean. Not one child, even if, you know, Mrs. Agarwal, you're a doctor, your child won't write that my mother is the, you know, best pediatrician. No. They will write कितना अच्छा खाना बनाती है, कितना अच्छा घर, she takes care of the family, she looks after my father. They will not write कि my mother is an achiever. So where are these things coming from? So these kind of things we are putting it into the child's mind. I mean, I really feel sad when I read these essays, especially class 1 and 2K. It seems as if, you know, you're marrying a maid servant. And I feel कि इससे अच्छा तो घर में मेड ही ले आते, वो सारा काम करती थी, उसके लिए भी यही लिखते. और फिर प्यार तो हो ही जाता है फैमिली से when you're working, you know, in the family. There is nothing of a woman's achievement, her pride, her person as such. So that is why, you know, all of us raise children like that subconsciously, and we treat the children differently, and even the safety things we preach to them are totally different. Now tell me, raise your hands and tell me how many of you are guilty of doing all this or some of this. Yes. Somebody who's not done anything of this and has really been a person who's taught gender equality. Totally. Radhika, कुछ भी नहीं इसमें से किया कभी भी? करा है ना तो हाथ उठाओ.
हाँ Anju, you know, it's not only with your sons. You have a son, I suppose, yes, but it's with your brothers, your family, you know. Yes. Sorry to interrupt. Yeah. To be frank, ma'am, living example, Vicky Baba is my brother and Prerna Baba is my co-sister. She's also there in the meeting. She has written the same thing. But my brother stays with with his father-in-law. But we don't have any problem, ma'am. To be frank, as in even his as in my Bhabi's father is also like a father for us also. Ma'am, so we don't have any problem. Okay. Very good. Very good. But tell me, where is his father? As in, to be frank, ma'am, it's been 8 years that we have lost our parents, as in both sides. दोनों में अगर choice होती, who would stay? Sorry, ma'am? अगर दोनों में choice होती, I mean, suppose my parents and his parents both are old, living in different cities, and we can only keep one. Whom would I keep? Ma'am, if we say in that way, first of all, he would have taken his parents, then coming back to my Bhabi's parents. Or Yes, yes. You know, we have many friends who are, you know, staying with their daughters. ऐसी बात नहीं है. But one day we were just analyzing कि हमारे circle में ज़्यादातर, you know, women के parents रह रहे हैं. But then when we analyzed, we saw कि एक तो या तो उनके in-laws आना चाहते नहीं हैं और दूर हैं and they are very self-sufficient. One. Secondly, उन लोगों के लिए जिनके in-laws हैं ही नहीं, और स्पेशली उन लोगों के जिन लेडीज ने अपने इन-लॉज की बहुत सेवा करी है. नाउ उनके जब पेरेंट्स उनके पास रह रहे हैं तो द सन इन लॉ सो इंडेटेड कि इसने मेरे पेरेंट्स की इतनी सेवा करी, वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो इट्स माय मॉरल ड्यूटी नाउ टू लुक आफ्टर हर पेरेंट्स. Yes, sir. So that's another, you know, reason that we look after the girls' parents. But there is, you know, I don't think you'll disagree with me. कहीं ना कहीं एक मन में एक या तो बहुत ऑब्लिगेशन या वो थोड़ा गिल्ट रहता है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं, हम इतने एजुकेटेड हैं, हमारे पेरेंट्स ने, लाइक माय पेरेंट्स हैव स्पेंट मोर ऑन माय एजुकेशन देन माय हस्बैंड्स पेरेंट्स हैव स्पेंट ऑन हिज एजुकेशन, बिकॉज वो तो 10th के बाद चले गए आर्मी में. ही स्टार्टेड अर्निंग, यू नो, बाय द टाइम ही वाज 11th 12th. आई डिड MSc. So you see, my parents have a longer period where they have spent on me, they've invested in me. And yet, when my parents come to my house, either I'm grateful, ki, you know, very nice of them, you know, they are not objecting, or I'm feeling a little guilty. I hope they don't say कि भाई इसकी मम्मी इसके पास ही रहती है, उन्हीं little bit. हालांकि it's so liberated, and I know that they won't feel, but there is that little difference is there in your mind. Whereas his parents come, वो right आएंगे. He will not feel कि भाई she is looking after them, how nice, you know, my wife is so nice. It's taken for granted. I meant to look after them, no? That is the difference. So, and parents, Hanji, yes. True? Yes, 100% true, ma'am. Obligation is both sides. Even our parents, although they are absolutely self-sufficient and they are visiting us for 3 days, 4 days, but they do not want to extend their period of stay, in spite of everything being on the best of the world. Like husband is also good, father is also good, mother is also good. Everybody is good, everybody is simply a beautiful person. Still, my parents hesitate to come. That's totally true. Totally true. And that is, yeah, that is, ये क्या है? सोसाइटी में ने हमको बोला नहीं है. Will your husband say कि नहीं इनको मत लाओ? नहीं बोलेंगे. Nobody's told us. But it so seeps into our system that by इन छोटी बातों पे जो हम ध्यान ही नहीं देते हैं, when we are bringing them up, this is all bringing up years. हमारे इतने साल से ये bringing up years में ऐसा है that हम इसको छोड़ ही नहीं पाते. So now, of course, a lot is changing with, you know, with economic independence. Frankly, economics should not come in a marriage. How does it matter whether my husband earns or I earn? If it's a happy, well-adjusted home, it should not matter. But abhi tak, men feel a little pang spending the wife's money.
कहीं ना कहीं when the wife is earning more, men are conscious कि इसके पैसे हैं. Women are not. We are very happy spending our husband's money, his money, my money, my money, my money. It's okay. But problem comes when I am earning more than him. And then he has to spend my money. That is a problem. Because शुरू से हमने उनको सिखाया है. Even us in school में हम क्या बोलते हैं कि you know, you are not doing well. तुम्हारी जिंदगी का क्या बनेगा? तुमको कल को एक फैमिली होगी, क्या करोगे? लड़कों को हम बोलते हैं. लड़कियों को हम बोलते हैं कि लिसन, अगर इतना साइंस नहीं हो रही, डज नॉट मैटर, तुम वोकेशनल जॉब ले लो, तो तुम्हारी सेकेंडरी जॉब होगी तो चल जाएगा. ये लड़कों को तो करो कुछ. So this is what we are putting in their heads also. So why won't they grow up with this? हाँ, लड़कों के घर माता पिता तो नहीं आते हैं. Yes. Now, why do we talk of women's right and why not men's right? Like, abhi there was a discussion and there was a thing on Women's Day. So my first question was, isn't it sad that we celebrate Women's Day and we are saying how we should be treated and how great we are and we are, ये आज हमको ये सब honor मिलना चाहिए. The boys don't even need to do that. There's no Men's Day. क्योंकि उनको मांगना ही नहीं पड़ रहा कुछ. उनका कुछ ऐसा है ही नहीं that they need to celebrate, or ask for rights. Today we are asking for girls' rights. I hope to see the day that we'll be asking for men's rights. उनके भी बेचारों के कोई rights हैं. So gradually maybe we are inching to that, and that will also be a sad day. Because why should any human being ask for their rights? It should be naturally, जिसके हर एक जना जो इस दुनिया में आया है उसका अपना राइट है एक इंडिविजुअलिटी का. सो नाउ टेल मी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? Sex ratio is becoming biased. Yes, that is, when it's truly sad, I tell you. There are many families which you see they are all prim, proper, absolutely money, education, everything loaded in them, and still the mindset doesn't go. They want a male child, and that's really sad. Even if they have colleagues, medicals, everyone I can tell you, and the girls are being dressed up in the most beautiful frocks and everything. They have 2 girls. Everything, the wife is also dressed up like anything. But their mindset has not changed, They still try for a 3rd child, that is a boy. So the liberation is only physical, dressing and hoteling, everything is there. But the mental liberation is still not there. Because it is basically कि हमारा नाम आगे कौन बढ़ाएगा. And that is why, when we have parents coming जिनके लड़के बहुत दुखी कर रहे हैं, I said आपने ही तो मांगा था, भगवान से मांग के लिया है, मांग के लिया है. And because he is such a precious thing, आपने उसको डिसिप्लिन करा ही नहीं है, आपने उसको कुछ हर्ट होने ही नहीं दिया है. So obviously this is the result of your upbringing. Then why cry? So, I mean, you asked for a son, God gave you a son. But उसके बाद you didn't ask कि भाई इसको मेरा ऐसा perfect son होना चाहिए, सब कुछ बाकी भी होना चाहिए ना. So आपने first wish तो grant कर दी. He doesn't have to grant every wish. Yes, they go out. Yes, boys stay alone. But even when they stay alone, the problem of this mindset has not changed. It is not about staying with joint families. That's a social change. कि joint families बहुत कम रह गई हैं, which I see in अहमदनगर. कई बहुत wonderfully, well adjusted joint families हैं. बहुत खुशी होती है देखकर. But by and large कम रह cities में तो खैर नहीं रह गई हैं. But mindset जो है अभी भी वही है. So how can we help now? How can we help to remove this whole bias? In schools, definitely we should encourage neutral sports. हम लोग स्पोर्ट्स में हमने खो खो लड़कियां खेलेंगी, क्रिकेट लड़के खेलेंगे. सो हमने उसको भी थोड़ा थोड़ा अलग कर दिया है.
गर्ल्स और बॉयज़ का स्पोर्ट्स अलग कर दिया है, बिकॉज द सोसाइटी इज़ गेटिंग सो पैरानॉइड कि छोटा सा भी जेस्चर होता है उससे इतनी बड़ी बात बन जाती है, तो इसलिए गर्ल्स और बॉयज़ के स्पोर्ट्स ही अलग कर दिए हैं. एंड देन बाय एंड लार्ज वी डोंट एनकरेज देम टू प्ले द क्रॉस ओवर गेम्स. अब खो खो लड़के खेलते हुए अच्छे नहीं लगते, कबड्डी खेले. सो क्रिकेट जो है लड़कियां खेलती हुई अच्छी नहीं लगती हैं, चलो इस तरह की गेम्स खेलो. इंडोर गेम्स ज़्यादा लड़कियां खेलती हैं. सो व्हाट वी कैन डू इन स्कूल्स इज टू एनकरेज न्यूट्रल स्पोर्ट्स, एनकरेज जेंडर न्यूट्रल कॉम्पिटिशंस. अब प्रोजेक्ट्स वगैरह भी जब हम देते हैं तो वी ट्राई एंड मिक्स अप द टू जेंडर्स. ऐसा नहीं है कि बॉयज़ ये करेंगे गर्ल्स ये करेंगे. उससे क्या होता है, एक हेल्दी रिलेशनशिप पैदा होती है. व्हेन दे आर वर्किंग टुगेदर दे नो that girls can have different needs also. They can have intellectual needs, they can be smarter. इसी तरह boys जो हैं वो artistic हो सकते हैं, so वो उनमें ये talents हो सकते हैं. That is why cookery competitions we have for a whole class, so which is so encouraging. अब देखा, when I see them, boys feel so proud winning a cookery competition, and this is the encouraging thing about schools, that इसमें आकर that little bias is at least going away. Now when I ask a lot of times I used to go and ask in classes also questions about this kind of bias, and इतना अच्छा लगता था कि actually बच्चे जो हैं they understand कि नहीं होना चाहिए और हम equal हैं. बट घरों में उनको इतना ज़्यादा इस तरह का इनपुट मिलता है कि वो थोड़े अब कंफ्यूज्ड हैं. बट इन स्कूल्स दे डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट गर्ल्स को इक्वालिटी होनी ही चाहिए, गर्ल्स हमारे साथ इक्वल हैं, दीज काइंड ऑफ थिंग्स. नाउ ऑल्सो मेक श्योर दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स हेल्प इक्वली एट होम एंड दे डोंट हैव डिफरेंट टास्क. अगर आपका बाइसिकल का टायर पंक्चर हो गया, या कार का, आपके बड़े बच्चे हैं और कार का टायर पंक्चर हो गया, नेचुरली व्हाई डोंट यू आस्क द गर्ल टू चेंज द टायर. आपका फर्स्ट होगा कि बेटे को बोलोगे चलो जरा इसको करा दो, या बाहर से इसको कुछ ले आओ. बाहर से लाना है, योर फर्स्ट रिएक्शन इज लड़के को बोलो. घर में कुछ साफ सफाई करनी है, लड़की को बोलो. And without thinking, it is not that you are thinking कि girl का काम है, लेकिन it's just coming naturally to us. So when they help you, they do all work, without any gender bias. Let them play outside, together. Just keep an eye on them so that there is no untoward incident. But don't stop, boys and girls from playing together. This is how healthy relationships are developed. That is why you see most of the schools now are turning into co-eds. I studied in a girls' school. I don't know, you must be having the same experience. जो लोग सिर्फ गर्ल्स स्कूल में ही पढ़े हैं, कभी बॉयज स्कूल में नहीं पढ़े हैं, उनका परसेप्शन ही डिफरेंट होता है. We do not have a healthy mindset about boys. It took me years to adjust to, क्योंकि हमारे घर में कोई मेल इन्फ्लुएंस ही नहीं था. Unfortunately, I did not have a brother. My father was always out. I never saw male influence. And then I always studied in a girls' school, girls' college. So even when I got married, I had very vague perceptions about men, boys. It took me many years. And then I encouraged, because I knew that this was something lacking, I encouraged my daughter to go always to co-eds. And itna mujhe acha lagta tha, because her perception of opposite sex was much better than mine. She could think of a healthy relationship with a boy, a friendship. I never understood a friendship. ये boys के साथ friendship भी हो सकती है. So इतना ज़्यादा mind पे इन चीज़ों का effect होता है that it's always better to have children studied in a co-ed school where children know कि these two genders are coexisting. And there can be a relationship beyond a physical relationship. And that they can only know when they grow up with children. As in, suddenly when they come, I still remember first time I was in college, some of my friends, they had some friends. And I was introduced to a boy and he shook my hand. First time I had a handshake with a boy was in college. और मुझे लगा कि अरे इतना बड़ा हाथ. I mean, I don't know what I felt, but that handshake had such a lot of effect on me, psychologically. So these are the, I think, bilkul warped things that you develop when you are not exposed to both genders.
Also in class and at home, encourage both of them to give their opinions, take their opinions, treat them equally. ये नहीं कि लड़कियों के it doesn't matter और तुम क्या जानो on subjects like politics, subjects like national issues. अगर लड़की बोलती है तो you can't brush it away. और लड़का अगर is giving an opinion or say a dance or music or painting, you can't negate his opinion. So these are some of the things that parents can do. And सबसे ज़्यादा be good role models to children, which every CHAM session 1 से 23 तक, I don't think there's been any session जिसमें मैंने ये बोला हो कि आप role model बनना is a biggest thing that you can give your child. Don't ever tell children that okay, boys don't do this or girls don't do this. They allow them to express their feelings fearlessly. Allow boys to cry. Allow boys to be emotional. Most boys, if you see, they can't hug because उनको लगता है ये बिल्कुल girlish चीज है. It's not that they don't have feelings, पर उनको hug करना आता ही नहीं है. उनको mother को hug करने में शर्म आने लगती है. So these are things which should be encouraged in the house. Allow the girls to repair gadgets. Allow the girls to change tires, go out, get things, and all outdoor things, and allow girls to speak up for others. जब वो दूसरों के लिए speak up करेंगी तभी वो अपने लिए करेंगी. And when boys show that soft feelings for girls, not in the romantic sense, but when they know that girls, it's I don't know if you read a story WhatsApp पे बहुत आ रही थी, where the mother says, I was most proud of my son when he was traveling in a bus, and then there's a girl sitting next to him and she got up and her skirt was stained, and this boy quietly handed over his pullover and says, cover yourself. I mean, such a nice proud moment for a mother when the son is being so sensitive to the girl. So these are the things you should appreciate in your sons and teach them how to do same kind of discipline, same kind of rules. If your boy is going out in the evening, same kind of rules should apply, that you should be back at 7 o'clock. और या फिर girls को भी आप 10 o'clock जाने दो. If the girl is to be accompanied by the brother should be accompanied by the sister, because he can also do naughty things, no? So who will check him? So these kind of things, they send out a lot of messages that teaches the girls and the boys to respect each other. And of course, the biggest thing, the last thing is the being good role models. Now you can tell me some of your experience. I have sort of ended, and you can tell me whether what we discussed, whether it's true, not true in your lives. Yes? The recording has stopped. And they are going to rage at some point of time. So availability becomes a very huge issue in such cases. So it's better you take him or her in your confidence and tell them the right way to proceed about it, because that's what creates trouble. It's not the inclination, because inclination, whatever is there, it's going to be there. You cannot change it. But the procedure of acceptance of this inclination, they come across many weird things. So you have to save them from that. That is your role in that, I guess. Ma'am, I agree with you, but my question is that would I expect it, मतलब means like I accept it कि मेरा बच्चा ऐसा जा रहा है तो मैं ठीक है उसको जाने दूं, या मैं उसको नहीं तो गलत है मैं उसको रोक दूं? यही बोल रहे हो, आपको एक्सेप्ट करने के अलावा चॉइस नहीं रहेगा. इट इज देयर, आप चेंज नहीं कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे मतलब हमने देखे हुए हैं करके जो बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिलीज से हैं, मतलब हर तरह के कंजर्वेटिव फैमिली से वो चीज है तो वो है, मतलब whatever you are you, I am I, वो चीज चेंज नहीं होगी. आपको एक्सेप्ट करने के अलावा ऑप्शन नहीं है उसमें. And the embarrassment the parents like they have to feel, और ये इसका क्या, इससे हम क्या डील कर सकते? Because in metropolitan cities this is like in everywhere. I saw in my school times, in my societies,
my youngest sister, school colleagues, they all like, she's also a teacher. So everywhere. तो उसकी मम्मा को, she's like in like, वो इतना डिस्टर्ब है कि वो मतलब किसी से बात नहीं करते या कुछ नहीं. और वो जो मेरी सिस्टर के कलीग हैं, वो टीचर एज अ टीचर, बट वो इतने क्यूट है, हम सोचते हैं इतने हैंडसम है, बट ही इज लाइक, उनको अलग इंटरेस्ट है उनका, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन जो एम्बैरेसमेंट पेरेंट्स फील करते हैं उससे कैसे डील किया जाए, उसका क्या किया जाए? मैम, एम्बैरेसमेंट इज अ स्टेट ऑफ माइंड. कुछ लोग तो सेरेब्रल पाल्सी के जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी एम्बैरेस फील करते हैं. इवन आई हैव अ स्पेशल किड. तो जब मैं पहली बार आइकॉन में आई थी ना, तो आई एम्ब्रेस्ड माय सेल्फ फॉर दोस कंडेसेंसिंग लुक्स, यू नो. टीचर्स या ओनर्स जो अथॉरिटेटिव पोजीशन में रहते हैं, वो आपको एक कंडेसेंसिंग लुक देते हैं ना, कि जैसे कि बच्चे का फॉल्ट है या हमारा फॉल्ट है, वो ऐसा है करके. But then when Icon did not do that, I felt so obliged. I always say I'm forever obliged to Icon, you know. तो embarrassment तो अपनी स्टेट ऑफ माइंड है और अपने अगल बगल वालों की स्टेट ऑफ माइंड है. अभी आइकॉन ने मुझे इतना अच्छा ट्रीट किया, कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे बिल्कुल अच्छा ट्रीट नहीं किया था. और मेरा बहुत अच्छा बच्चा है. अभी सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों को देखेंगे, एंजलमैन सिंड्रोम के बच्चों को देखेंगे, डाउन सिंड्रोम को देखेंगे, बहुत तकलीफ होती है मैडम पेरेंट्स को. ये तो मतलब कोई इशू ही नहीं है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. और आपको आउटलिव करने वाला है. थैंक यू. एंड ऑल्सो यू नो, ऐसी चीजों में जब पेरेंट्स एक्सेप्ट करते हैं ना, तो दुनिया बहुत जल्दी एक्सेप्ट करती है. आपका अगर सपोज आपकी लड़की है, वो किसी के साथ इन्वॉल्व है, डिफरेंट कास्ट और वट एवर, सो अगर आप उसे अपना लेते हो तो कोई नहीं, सब बोलते अरे इनकी लड़की ना उसके साथ थी, वेरी गुड या वेरी ब्रॉड माइंडेड, यू नो, दे हैव एक्सेप्टेड ना. अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, लड़की उसकी भाग गई, एंड देन यू नो गॉसिप जनरेट्स. सो सिमिलरली आपका बच्चा है, जैसा भी है आपका है, आप अब अगर उससे प्यार से एक्सेप्ट करोगे तो बाकी सब एक्सेप्ट करेंगे. एंड इट इज जस्ट एक्चुअली लाइक व्हाट शी वाज सेइंग. आई मीन द चाइल्ड इज नॉट एट फॉल्ट, द पेरेंट्स आर नॉट एट फॉल्ट, तो whom are we blaming? एंड सोसाइटी के लिए आप अपना एक इतना गहरा रिलेशनशिप जो है वो कैसे सेक्रीफाइस कर सकते हो? So I think the best way is to accept it, support it, because like she said, the related problems are many. अगर आप accept नहीं करोगे, psychological problems हैं, suicide attempts होंगे, depression होगा. So all these things are more difficult to deal with than the gay relationship. At least it's a loving relationship, whether it is gay, lesbian or any relationship. कितनी marriages, इतने loveless marriages होती हैं. So is it better to have a loveless, marriage than a, loving gay relationship? After all, they're two human beings only, no? It might take us, because it's new. We are not exposed to it. It was kept under, closed doors. अभी ये बाहर आने लगा, हमें भी अभी समझ में आने लगी है कि it's natural. पहले हम क्या सोचते थे? There's something wrong. पहले तो रेप को भी सोचते थे कि लड़की को something wrong, कि लड़की का रेप हो गया. So now, like, yes, she's saying one can always go for surrogacy for a kid. अगर kid ही चाहिए, surrogacy में कर लीजिए. इतने आजकल options हैं. So हमारे अब society is forever changing. जो चीजें कल अच्छी नहीं थी, वो ही आज अच्छी हो गई हैं. So we are also, हम सब अपनी convenience पे change करते हैं. आप में से कितने लोग, ज्यादातर लोग बहुत religious होंगे. So you just analyze कि जो चीजें आप करते हो उसी चीजों का तोड़ भी निकाल लेते हो. आई हैव सीन कि फास्टिंग पूरा दिन कर रहे हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, लेकिन क्योंकि भूख लग गई है और बहुत ज्यादा दिल कर गया है तो उसमें से थोड़ा सा कुछ तोड़ निकाल के एक समोसा खा ही लेते हैं, है ना. सो यू सी, whenever you want to do, you bend rules. So bend this rule and I think accept your child as it is, and they are precious no matter what. And like the sterling example is Mrs. Agarwal's child, you know. She's saying कि special child जो पहले आया था, you see the kind of work he's doing, the way he's shining. How many of our normal kids are shining like that? So who are we to consider this child abnormal? Maybe he's, more than normal. Even great personalities, they were dyslexic, there were, so many cases you hear. So there is nothing like normal or abnormal.
It's the society thinking that's normal or abnormal which makes them so.